we are going to discuss about the classification of the brain. You have read in lower classes forebrain, midbrain, and hindbrain. But when you will see the brain, what is the location of the brain, and what is the covering of the brain, and how can you classify for the diagnosis of the patients, for the diagnosis of the disease. Just we will see first of all, brain is situated in intracranial cavity. When you will see the sagittal section of the head, then you will find out how many layers from the skin to the brain is there. Because any type of the head injury or craniocerebral injury, it will suspect whether the involvement there is injury in the head or meninges or bone or scalp. These are the component of the head. The cranial cavity, when you will see the cranial cavity from outer to inner, this is the hair or there in the head, and below is the skin. मैंने बंद किया था इसको, जस्ट प्लीज. For outer to inner, when you will see the situation of the brain, we have discussed the cranial cavity. It formed by the 8 bones: frontal, 2 parietal, 1 temporal, and sphenoid and ethmoid is forming the floor of the cranial box. Cranial cavity is the brain box is there. Brain box is formed by the frontal, 2 parietal, 2 temporal, 1 occipital, and sphenoid and ethmoid. How many bones are there? 8 bones. It's clear. From the outer to inner, you will see these are the hair, and is the skin is there. Below is the galea aponeurotica. This is very important structure. Galea aponeurotica. This is the forming the aponeurosis. Aponeurosis is there. Aponeurosis. Frontal muscles from the front side, occipital and back side, fronto-occipital muscles which are forming the aponeurosis in the cranial vault. In cranial vault is the aponeurosis is there, and when you will try to catch the skin only, it is impossible. We are going to catch the scalp is there or the aponeurosis. Below it's the aponeurosis, that is called galea aponeurosis, and this is also called danger area. Any type of the head injury, when you are the seeing the patient is having the hematoma and the scalp is there, because this is the it's called scalp, and this is the galea aponeurotica is there. Below galea aponeurotica, then you will find out this is the bone.
Bone is the dipole. This is the flat bone, and this is the dipole in nature is there. Outer is the periosteum. This is the outer. It's called periosteum, and inner surface of that is called endosteum. Endosteum. This is the bone. Dipole porous bone is there. Outside hair, skin, and galea eponeurotica. These are the components outside of the cranium. And when we will go the cranium, below the cranium, immediately you will find out the loose connective tissues are there and attachment of the three meninges are there. One is the first meninges which is called durameta. This is the durameta and is the double layer. This is the durameta is the double layer. While you will see in the spinal cord covering of the meninges is the same, but is the single layer. This is the durameta. In the cranium, in the brain, covering is the two layer. That is called double layer. Outer and later on after that you will see this one arachnoid and below it you will find out this one is the pia is the attached with the cerebral cortex. This is called pia mater बोलते हैं कुछ लोग pia three layer durameta, arachnoid and pia. These are the things are there. Durameta, between the durameta and arachnoid, between its a space is called that it calls subdural space. क्या बोलते हैं इसको? Subdural. Below the durameta, space is there that is called subdural space. Between the arachnoid and pia, this is called subarachnoid space. Subarachnoid space. Subdural space, subarachnoid space. These are the things. This is the pia and pia it directly is having the vascular fringes are there and more vascular supply is there attached with the structure of the brain. This one cerebral cortex is there and is directly attached with the sulcus and gyri is the same because cerebral hemisphere is having not a smooth surface is there. It's having the sulcus and gyri and pia also go inside like that. Sulcus and gyri is also having a such type of the arrangement is there. These are the things. Subarachnoid space is having the CSF. This thing CSF, cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid in the central nervous system. Outside and inside, the cerebrospinal fluid is flowing. This is formed by the choroid plexus and it's go inside of the brain and outside of the brain. From the outside, subarachnoid space is there, CSF is there, continuation of the spinal cord. It's also having the subarachnoid space. So outside also the CSF is circulating and inside also the CSF is circulating. So what is the importance of the CSF? It's replace lymphatic system from CNS. One thing I have told you that it's replace the lymphatic system and it's also having an important role because whole central nervous system is not directly attached with the bony
part, so that what will happen? It's hanging into the vertebral canal, spinal cord, and the cranial cavity. Brain is also not directly attached with the bony surface. So mobility of the brain, mobility of the brain is not possible, but it's not having the direct attachment is there. Most important things regarding the craniocerebral injury, head injury. One thing you should keep in your mind. First of all, you will suspect the injury, how much height was there, and second thing is age of the patient. This is very important. Below 2 years, below 5 years baby is there, when it's rolled down, कई बार चारपाई से नीचे गिर जाता है बच्चा, लेकिन उसको हार्ट इंजरी की कोई गुंजाइश नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो उसके सूचर्स होते हैं वो क्लोज नहीं होते हैं, उसमें एंटीरियर फॉन्टेनेली होता है, आगे पीछे पोस्टीरियर फॉन्टेनेली होता है, और ये पूरे सूचर से जुड़े नहीं हुए होते हैं, और बोन्स जो होती है उतनी कैल्सीफाइड नहीं होती है, वो बर्दाश्त कर सकती है उस इंजरी को, उस इम्पैक्ट को। 2 फीट की हाइट है, बच्चा गिरा, रोने लगा, माँ ने उठाया, ये सब। लेकिन अगर 70 साल का आदमी पेशाब करने के लिए उठा और बिस्तर से गिर गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, समटाइम्स इट्स विल गो इन द कोमा। हाउ इट्स हैपन? जस्ट इमेजिन। These are the things which are concerned with the middle age. Sometimes कई बार चोट लगती है और ब्लीडिंग होती है, तो गैलिया एपोन्यूरोट का, दिस इज द साइट इन विच हेमेटोमा विल बी देयर। यहाँ पर कई बार हम देखते हैं ना कि देखो चोट लगी, यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो गया, हेमेटोमा, आइस से हम उसको सिकाई करते हैं ब्लीडिंग चेक करने के लिए। गर्म, कभी हेड इंजरी में हॉट फर्मेंटेशन नहीं देते, कोल्ड आइस से सिकाई करते हैं। क्यों? उसका बेसिक कारण है कि जो वेसल्स होती हैं ना वो श्रिंक कर जाती हैं और ब्लीडिंग चेक होती है, इसलिए हार्ट में क्या होगा, वेसल्स डायलेट हो जाएंगे। दिस इज द बेसिक थिंग्स आर देयर। ये जो है हेमेटोमा होता है, हेमेटोमा वी कैन फील इजीली, बट दिस इज द आल्सो कॉल्ड गैलिया एपोन्यूरोटिका, is also called danger area. Why the danger area is there? Because this is having the hematoma, sometimes infection will be persist and it may travel towards the inside of the cranial cavity. The most important things regarding, so we have taken, always you take precautions when he is having the hematoma, you take precautions as it may be. But one thing you remember it, if injury in the inside of the brain is there, it may be subdural hematoma, it may be concussion. And about the craniocerebral injury, just you remember it, first of all you take the history of the patient, whether concussion was there, थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ था क्या, मालूम नहीं हुआ था क्या, just you ask to the patient. When you will ask the patient, then definitely he will give the history. At that time I was shut down, उस समय मुझे concussion. Always you remember it. When the patient having the concussion, it means there is some intensity effect on the brain, and the brain intensity is affecting, but it may be not any type of the abnormality may there, but we should watch the patient for the 24 hours. Whether the patient is having any type of the headache is there, vomiting is there. Headache and vomiting, this is the peculiar sign of the head injury which will affect injury on the brain. If these are the two symptoms are not going to appear in the patient after injury, after trauma, then that's why don't worry about that. This is the injury of the scalp. It happens. It will be recovered within a less time. So these are the things. This is the from the outer to inner. This is the covering of the brain. Brain itself near about 1400 gram and 1300 gram in the female, 1400 gram in the male, and it's situated in the cranial cavity and slightly mobile.
Sometimes we are going here and there. Sometimes दरवाजे के बाहर गए या कोई डायरेक्ट फ्रंटल सीधा लग जाता है कई बार. डोंट थिंक अबाउट दैट कि यहाँ से ही इंजरी हो सकती है. पूरे क्रेनियल कैविटी में है, यहाँ से भी हो सकती है, सर से भी हो सकती है. जस्ट यू रिमेंबर, मैंने बताया था दरवाजा छोटा हुआ, लंबे लोग रहे, कई बार दरवाजा यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड क्रेनियल वॉल्ट. दिस वन वी आर हैविंग द कॉम्प्रेशन, डायरेक्ट ईंट गिर गई, पत्थर गिर गया, दिस इज द क्रेनियल वॉल्ट इज देयर. सो यू रिमेंबर इट. समटाइम्स वन केस इज मे बी subdural hematoma. This one 15 दिन बाद भी उसको कॉमा में पेशेंट जा सकता है. हेमेटोमा, सबड्यूरल हेमेटोमा. This is a very minute vessels are going to be injured and continuous bleeding will occur, and for the after 24 hours, after 2 days, 3 days, it's giving the symptoms of the any weakness of the muscle. So many things may be there. Just you remember it. These are the things. Hematoma is there. This is the some applied aspect of the brain and concerned with the division, concerned with the from outer to inner go in the brain. Now we come in the our point, that is the classification of the brain. Classification of the brain. These are the things. When embryological development of the brain, then these are the three terms are there: progencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. These are the three terms you have read in lower classes. Just we will see. This one. This is the forebrain, is the midbrain, and this one is the hindbrain. Just this one, cerebellum. So this part midbrain and this is the forebrain. This is the basic classification is there. The forebrain is called progencephalon. Progencephalon, mesencephalon, embryological development. Accordingly, hindbrain is rhombencephalon. Rhombencephalon. These are the three parts of the brain. Embryological, according to progencephalon, mesencephalon, and the rhombencephalon. Now, further for the better classification, we will see one by one, and component of the gray matter or the what is the matter later on we will classify it. These things are there just because it's also having the cavity is there in the brain. Inside the cavity is there, that is called ventricles. In the brain inside is the cavity is there. Just we are going to classify this. Forebrain, midbrain, and hindbrain. Hindbrain further divided into metencephalon and myelencephalon. Metencephalon is concerned with the pons and medulla oblongata,
and myelencephalon is concerned with the cerebellum. सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी. Myelencephalon is ठीक है. Myelencephalon pons and cerebellum, and myelencephalon is concerned with the medulla oblongata. These are the parts of the hindbrain: forebrain, midbrain, hindbrain, and this is also having the important structure ventricle, fourth ventricle. आप जानते होंगे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल होती हैं. आपने वेंट्रिकल हार्ट में पढ़ा. हार्ट में कितनी वेंट्रिकल हैं? हार्ट में कितनी वेंट्रिकल हैं? कौन कौन सी? हार्ट में 2 वेंट्रिकल हैं. कौन कौन? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ब्रेन में कितनी वेंट्रिकल हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वेंट्रिकल? एनीबॉडी टेल मी. What is the name of these ventricles which are situated in the brain? Two lateral. Very good. Two lateral, right and left. Two lateral ventricle. One is the third ventricle. One is the fourth ventricle. These are the things. The fourth ventricle situated in which part of the brain? Hindbrain. You remember it. And in the midbrain, just in the midbrain, this midbrain is having cerebral peduncle, and second is this was the cerebral aqueduct. Cerebral aqueduct or duct of Sylvius, and this one is the Corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina. These are the 3 parts of classification of the midbrain. आगे का भाग सेरेब्रल पेडंकल, उसके बाद सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और पीछे का भाग है उसको कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना. चाहे तो आप लिख सकते हैं कार्पोरा. सेरेब्रल पेडंकल जो है इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं: क्रस सेरेब्राई, सबस्टेंसिया नाइग्रा एंड tegmentum. These are the 3 components of the cerebral peduncle which are forming the cerebral peduncle: crus cerebri, substantia nigra, and tegmentum. This is the substantia nigra which are having blackish in color. Yesterday we have discussed the neuromelanin is present in the substantia nigra, which are responsible for the secretion of the dopamine, and dopamine is responsible for the movement, controlling the minor movements are there. So substantia nigra, tegmentum, these are the parts of the cerebral peduncle. Cerebral peduncle, cerebral aqueduct, this is the duct. This is also called duct of Sylvius. ये डक्ट ऑफ सिल्वियस है. सेरेब्रल एक्वेडक्ट को डक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं. ठीक है ये. और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है, ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है वो उसमें 2 भाग होते हैं. एक को हम कहते हैं, इसमें क्या है, कार्पोरा 4. तो 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं और 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई हैं. यू कैन मेंशन हियर कार्पोरा. कार्पोरा का मतलब 4. 4 का मतलब 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई.
इंफीरियर, दो सुपीरियर कॉलिकुलाई और दो इंफीरियर कॉलिकुलाई। इसको हम क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये पोस्टीरियर पार्ट में है। देखें बहुत ही सिंपल है। पहला मैंने लिया फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। ओके, अभी हम फोर ब्रेन पे जाएंगे। पहले हमने छोटे छोटे लिए थोड़ा सा। ये जो हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन में क्या क्या है? मेटेनसेफेलॉन है, माइनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में पोन्स और सेरिबेलम आता है, और माइलिन, माइलिन से तो मेडुला ऑब्लंगेटा है। और इसमें जो वेंट्रिकल होती है वो कौन सी वेंट्रिकल होती है? फोर्थ वेंट्रिकल होती है। इट्स क्लियर नाउ? इट्स क्लियर। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में हमने क्या किया? मिड ब्रेन को तीन भागों में बांटा। आगे का जो भाग है मिड ब्रेन का, उसको क्या कहा? सेरेब्रल पेडंकल। बीच में क्या है? एक्विडक्ट है, छोटी सी नलिका है, डक्ट ऑफ सिल्वियस है। और उसके बैक साइड में क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है? दो सुपीरियर कॉलिकुलाई हैं और दो इंफीरियर कॉलिकुलाई। एनी डाउट? नो। ओके, नाउ वी कम इन द forebrain. This is having the too much detail about the forebrain. Just we will see forebrain. This forebrain एक सामने की ओर, फोरब्रेन ऊपर का भाग है। एक सिंपल सा बात याद रखना कि जो मिड ब्रेन है वो मिड ब्रेन कितना सा है? मैंने बताया था कि ब्रेन स्टेम होता है। ऊपर जो मशरूम शेप है, ऊपर का जो गोभी का जो ऊपर का भाग है वो पूरा का पूरा क्या है? फुल ब्रेन है। बीच में 1 इंच लंबा, 1 इंच, ये याद रखिएगा, 1:1, बस इतना ही मिड ब्रेन है। उसके ऊपर का फोर ब्रेन है, उसके नीचे हिंड ब्रेन है। अगर व्हेन यू विल सी द विसरा ब्रेन, then you will find out 1 by 1, 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा जो स्टॉक है वो क्या है? मिड ब्रेन है। उसमें सेरेब्रल एक्विडक्ट है। और उसके ऊपर का क्या है? फोर ब्रेन है। नीचे क्या है? हिंड ब्रेन है। इट्स क्लियर? ये कनेक्टिंग है। मिड ब्रेन क्या है? कनेक्टिंग है। किसके किसके बीच के है? हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन, दोनों का कनेक्टिंग स्टॉक है। हैव यू अंडरस्टैंड? ये जो कनेक्टिंग स्टॉक है फोर ब्रेन, अगर देखें आप थोड़ा सा कि ब्रेन स्टेम, एक शब्द मैंने बताया था ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है? मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, ये स्टेम बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। These are the very common words are there because all the vital centers are present in the brainstem. When death is going to be declared, always the neurologist writing death of brainstem. This is a basic thing, brainstem. These are the three components: midbrain, pons, and medulla. And these three brains, just you imagine it, the brainstem is having the nucleus of the cranial nerves. Yesterday we have discussed the nucleus of the cranial nerve is formed by the which matter? Nucleus is formed by the gray matter. Where is the body of the neurons is there? That is the nuclei, cranial nuclei. Cranial nuclei is formed by the which matter? Gray matter. Just we come the point in the forebrain. The cerebral hemisphere or cerebrum, and this cerebrum is there. इसी को हम कहते हैं, दूसरा नाम है टैलेंसेफेलॉन। टैलेंसेफेलॉन, सेरेब्रम ऊपर का। दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को मिलकर के क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को मिलकर क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। और सेरेब्रम को बाहर का जो है पूरा का पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? टैलेंसेफेलॉन। क्या बोलते हैं? टैलेंसेफेलॉन। अब ये टैलेंसेफेलॉन है। अब ये बाहर का हो गया फोरब्रेन का, और उसके अंदर है ना
उसको तो जो अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन, इसको हम दूसरा नाम देते हैं इंटरब्रेन। क्या कहते हैं इसको, इंटरब्रेन डायनसेफेलॉन। अंदर का जो है, अंदर का किसका, फोर ब्रेन का डायनसेफेलॉन। दो क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। एक को क्या कहेंगे, टेलेनसेफेलॉन, और जो इनसाइड है उसे क्या कहेंगे, डायनसेफेलॉन। इट्स क्लियर। अब इसमें तीसरा जो कंपोनेंट है देखेंगे, इसमें तीसरा जो है वेंट्रिकल्स है। ये वेंट्रिकल्स हैं। वेंट्रिकल कौन कौन सी हैं फोर ब्रेन में, यहां पर लैटरल वेंट्रिकल हैं और थर्ड वेंट्रिकल। अब आप कहेंगे कि थर्ड वेंट्रिकल क्यों कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड तो नहीं है, नहीं, हमने काउंट किया, राइट लैटरल वेंट्रिकल एक, लेफ्ट वेंट्रिकल दो, और जो नीचे है डायनसेफेलॉन में है जो, वो कौन सी है, थर्ड वेंट्रिकल। डायनसेफेलॉन में थर्ड वेंट्रिकल। हैव यू अंडरस्टैंड, राइट लैटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल, और कैसे, अगर आप वेंट्रिकल सिस्टम देखेंगे, आप वेंट्रिकल का जस्ट मैं बताता हूं आपको समझाने के लिए कि वेंट्रिकल से कैसे रहते हैं, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको। ये राइट और लेफ्ट, एक राइट है और दूसरा लेफ्ट है, ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है। इन दोनों वेंट्रिकल से यहां से फोरामेन मोनोरो के द्वारा यहां थर्ड वेंट्रिकल बनती है। दिस इज, इसके बाद ये इस तरह से सेरेब्रल एक्विडक्ट आती है, और ये सेरिबेलम में इस तरह से, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये थर्ड वेंट्रिकल है, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है, और ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर हुआ, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, सेरेब्रल, कंटिन्यू, सेरेब्रल एक्विडक्ट। जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है ये पोर्शन, ये किसमें है, कौन से पार्ट में है, मिड ब्रेन में। ऊपर का पूरा किसमें है, फोर ब्रेन में है, नीचे किसमें है, हिंड ब्रेन में। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन। Inside CSF is flowing, outside in the subarachnoid space CSF is flowing. Have you understand? Just you remember it, the ventricular system of the brain. Ventricular system, just I have told you. Later on we will discuss about the foramens of Monro, foramens of Lusaka, foramen of Mizandi. Later on we will discuss when I will teach the ventricular system of the brain. Just come the point. Just diencephalon, interbrain, lateral ventricle, and this one. This one is also having some peculiar structure. That is, आप जानते हैं राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर हैं, दोनों को मिला करके हमने सेरेब्रम कहा है। राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, तो राइट की इंफॉर्मेशन लेफ्ट में जानी होती है, लेफ्ट की इंफॉर्मेशन राइट में जानी होती है। इन दोनों को जो जोड़ने वाला जो है उसको हम क्या कहते हैं, वो कॉमिश्योर, ये कॉमिश्योर कहते हैं, जो राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट में। कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो राइट से आगे से फ्रंटल लोब से ऑक्सीपिटल में जाते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा। कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो सेम साइड नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो फाइबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, यहां से फ्रंटल लोब से, आपने विजुओ कॉर्टेक्स होता है, आपने कोई चीज देखी, ऑप्टिक नर्व ने महसूस की, विजुओ कॉर्टेक्स में गई संवेदना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स ने इंटीग्रेशन किया, और
है, इंटीग्रेशन किया उसने, इंटीग्रेशन करके फ्रंटल लोब को इंफॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि ऑर्गन ऑफ माइंड तो वो है, वहां से हमको डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स करना है। हैव यू अंडरस्टैंड? समबडी इज, जैसे कोई आदमी मिला रास्ते में, आप जा रहा है, उसने हाथ हिलाया, आपने हाथ हिला दिया इमीडिएट, कितनी फास्ट सर्विस हुई है मालूम है आपको? कितनी फास्ट सर्विस हुई। आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, उसने पहले हाथ हिलाया, फिर बाद क्या आपने हाथ हिलाया, क्या हुआ? स्पेशल सेंस आय है जो हमारे आय से ऑप्टिक नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स में गया, विजुअल कॉर्टेक्स से हायर सेंटर्स में आया, और वहां पर आकर के वहां तुरंत वहां डिसीजन ले लिया। ये अपना परिचित लगता, अपना तो क्लोज फ्रेंड है। एंड ही हैज गिवन ऑर्डर टू आवर वॉलंटरी मसल्स एंड आवर नोज, एंड ही हैज गिवन, फिंगर को आदेश दिया, क्या किया? बस से बैठे बैठे ही, व्हाट इज दिस थिंग, वेरी फास्ट, बट इट्स हैपेंस, होता है, बट इज द वेरी फास्ट। जस्ट यू मे इमेजिन इट, इफ वी आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई द पर्सन, once a time I have seen, उस आदमी को एक बार ही देखा है, उसने तो हाथ हिलाया या बस आगे निकल गई, कोई कारण हुआ, आप बैठे ही रहे, बस जब आगे निकल गई तब आपके ब्रेन ने रिफ्लेक्ट किया, ओ ये आदमी, जस्ट, बट यू हैव lose the chance of the response. Try to understand. Sometimes some patients which are not having the response properly, I have asked any question, immediately you are not, you're afraid. सर ने पूछा कैसे बताएं, आता है भूल गए, बात सर ने just I have told you, just to, this is the commissures and projection fiber, projection fiber, ये कॉमिश्योर्स हैं। वर्ड, ये कॉमिश्योर जितने भी हैं ये किस मैटर से बने हैं, बोलिए? कॉमिश्योर, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग मी जस्ट टेल मी, कॉमिश्योर व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर? व्हाइट मैटर, दिस इज द केबल बंडल, ये लाइन है, व्हाइट मैटर इज मीन्स टेल ऑफ माउस, यहां से वहां तार जा रहे हैं, बराबर है ना? जितने भी कॉमिश्योर्स, प्रोजेक्शन फाइबर, एसोसिएशन फाइबर, व्हाट इज दिस थिंग, these are the, what is this thing, which matter? Remember it, these are the white matter, white matter, this is the white matter, these are the things, white matter. Now something more deep in structure of the telencephalon of the forebrain, कुछ और रचनाएं हैं इसी का, कॉमिश्योर्स का है, आप पढ़ेंगे। कार्पस कैलोसम इज द एग्जाम्पल, कार्पस सबसे बड़ा कॉमिश्योर है, कार्पस कैलोसम, जो कि लेटरल वेंट्रिकल की वॉल को बनाता है, कार्पस कैलोसम राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में लगा रहता है, जो कि सेपरेट करता है दोनों लेटरल वेंट्रिकल को, कार्पस कैलोसम है। टेपिटम, चाहे तो लिख सकते, टेपिटम, इंसुला, एक्सटर्नल कैप्सूल, internal capsule, these are the fibers which are made by the white matter, giving the information from here to there, यहां से वहां इंफॉर्मेशन को, संवेदना को भेज रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द बेसल न्यूक्लियाई। व्हाट इज दिस थिंग? बेसल न्यूक्लियाई। These basal nuclei, which are situated in the forebrain and in the deep side of the telencephalon, and these basal nuclei is going to be very important role about the control and the integration. Just and one thing, the basal nuclei, when we will classify basal nuclei, is the lentiform nucleus, lentiform nucleus,
caudate nucleus. These are the name of the nucleus. Caudate nucleus and red nucleus. मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दे रहा हूं. रेड न्यूक्लियस, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस और caudate nucleus. These are the some example of the basal nuclei. और ये जो है रेड न्यूक्लियस, यही रेड न्यूक्लियस है जिसको मैंने कहा था रेड कलर होता है. दिस इज द नाउ बेसल न्यूक्लिया इज द व्हाइट मैटर और द ग्रे मैटर. क्यों? इट्स वेरी क्लियर, बिकॉज द बंच ऑफ द कलेक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द न्यूरॉन्स. इट्स ओके, इट्स क्लियर. आई थिंक बहुत समझदार हैं आप लोग, जल्दी समझ में आ गया है ना. बेसल न्यूक्लियाई इज द now after basal nuclei we will also study the next component. This is the mixed by limbic system. Limbic system. Limbic system. This is also a part of the forebrain. Limbic system, some authors mention as a limbic lobe. Limbic system, which is responsible for the behavior, emotion, memory, so many lot of things are there. And you can say the biological rhythm is also regulating by the limbic system. These are the things. And limbic system is also called limbic system is also called, this one is visceral brain. एक अलग ब्रेन मैंने बताया आपको, visceral brain. Limbic system is also called which brain? Visceral. विसरा से संबंधित. Just imagine it. When you are feeling the stress, the flow of the adrenaline, noradrenaline are going to be increased by the chromophene system, and it will injure your organs. You can't identify which type of the injury you have taken. So many times, so many philosophers giving a such type of the references are there. He not having the scientific value, but he is telling us क्रोध करने का मतलब है खुद को सजा देना. क्रोध करने का मतलब है खुद को सजा. स्ट्रेस लेने का मतलब है खुद को सजा. Just imagine it. Neurohormonal control in our body, which are regulating all these system in our body, definitely day by day it's going to be injured by the emotional activities. And so many times we are having the emotional touches are there. It may be pleasant, it may be sadful, but these are the how to emotion convert into the circulation. It will affect, because each and every component of the body are having the regulation by the emotional activities. So we have taken the definition of the health, well-beingness of the emotion also, spirits also. These are the things. Just so this is the visceral brain. How many brain you have find out? Interbrain. Just see, this one is the interbrain, है ना? This one is the visceral brain. These are the things. This is about the classification of the brain. This is the classification of the brain. You can identify, you can give the classification. Just tell me with me, the brain is divided in how many parts is there? Just you remember it. We are divided.
forebrain, midbrain, hindbrain, and ventricles also. Have you understand? Ventricles. How many ventricles are there? Four ventricles. Four ventricles are there. Now, just one thing I am rarely, in the case of the 2 lakh person, we are dissecting, then we are finding fifth ventricle. ये एक ऐसा सवाल है जो मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी उलझा देना लोगों को. Fifth ventricle. This sometimes it may be fifth ventricle, but rarely fifth ventricle. What is the fifth ventricle? Accumulation of the CSF. Write down accumulation of the CSF in partition of the lateral ventricle. In partition of the lateral ventricle. Fifth ventricle. Partition of the ventricle have septum pellucidum. जैसे कार्पस कैलोसम ऊपर होता है, सेप्टम पेलुसिडम नीचे रहता है, और कार्पस कैलोसम जो सेप्टम पेलुसिडम है, दिस इज द पार्टीशन बिटवीन द राइट वेंट्रिकल, राइट lateral ventricle and left ventricle. Try to understand. Lateral ventricle, right and left lateral ventricles are there, and these both ventricles are having a partition. This partition is formed by the septum pellucidum. Is the fiber septum pellucidum. This is also made by the white matter and connective tissues. Septum pellucidum. Write down. Lamina of the septum pellucidum. Lamina of the septum pellucidum have accumulation of the CSF. Accumulation of the CSF. It's called fifth ventricle. It's rarely. Have you understand? Sometimes it's rarely. Fifth ventricle is there. This one. So, fifth ventricle. It's called fifth ventricle. 2 lateral ventricle, 1 third ventricle, and 1 fourth ventricle, and these are the four ventricle. But sometimes the partition of the lateral ventricle having the septum pellucidum and septum pellucidum having the 2 lamina, in accumulation of the CSF between the 2 lamina, it's called fifth ventricle. It's clear? Just you remember it. Today, any query, just ask me. कोई सवाल जवाब हो आपका? नेहा, क्लासिफिकेशन बोलो आप. Just tell me. I'm just repeating it. थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल एंड फिफ्थ वेंट्रिकल, उसको वेंट्रिकुलर टर्मिनल्स बोलते हैं, वो एक सेक्शन रहेगा. और फोर ब्रेन में रहेगा सेरिब्रम, और जिसको टेरेंशियल फ्लूइड बोलेंगे. उसमें राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और उसके बाद आएगा डायंसेफ्लोन, जिसको इंटरब्रेन बोलते हैं. इसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और भी आएगा. इसमें फिर बेसल न्यूक्लियाई रहेगी. उसमें एक रेड न्यूक्लियस था जो रेड मैटर बना रहा था, और इसमें केमिस्टर भी रहेंगे और प्रोटेक्शन फाइबर भी रहेगा. और उसके बाद मिड ब्रेन में रहेगा सेरिब्रल पोडेंकल, जिसमें रहेगा क्रेस सेरिब्राई, सब्सटेंशिया नाइग्रिया, जिसको ब्लैक मैटर भी बोला था. और उसके बाद टेगमेंटम रहेगा. उसके बाद okay, it's okay. Now we will see these are the component of the brain and concerned with the disease, concerned with the function. Just you remember it. Write down the cerebellum. We have taken the cerebellum, this one. This is also called small brain. Small brain. Yeah. This cerebellum. Cerebellum is called small brain. Just like that. Cerebellum. 2 cerebral hemisphere is there. Between vermis is there,
and complete cerebellum is called the which brain? Small brain. What is the role of the cerebellum? Just small brain. Only balance, equilibrium, posture, balance, all these things are concerned with the cerebellum. When we are going to examine the cerebellum later on, how to, if the person is not going in the one straight, you can immediately diagnose whether the patient is having normal cerebellum or not. There is there टिप ऑफ नोज, दिस इज द एक्सपेरिमेंट इज द पेशेंट, यहाँ वहाँ घुमाओ, नाक में ही उंगली रखनी चाहिए. अगर समटाइम्स यू हैव सीन समबडी इज ड्रंकन इन गोइंग इन द रोड, दैट इज द गेट, गेट इज द सीजर गेट. सीजर गेट इट मीन्स लाइक दैट, this one seizure gate. Have you understand? If the cerebellar disease is there, it can't go in the one straight line. This is the small brain. Thank you very much. Next time. Next.